तो आज स्टार्ट करवा आम फ्रीडम स्ट्रगल विषय में आम ओडिशा रे कोई भाया तर फ्रीडम स्ट्रगल होता आम जाए देखिले तुम एनसेंट सब कौन कौन होता जस्ट फॉर दी रिविजन कर आम पूरा एनालिसिस वीडियो रे टोटल देखा कि फास्ट टू लास्ट जाए कौन होता किए आसाला केमती आसाला बट यदि जमी एग्जाम पाखे अच्छे तो टोटाल ये बुकटा ही बुकटा जो तुम रिविजन करने को चाहो तो ये वीडियोस को सब 2-3 थर देखी दियो कि टर्म तुम मुंड रही बस ये सब सर्ट क्वेश्चन आंसर यू हैव टू फिल तो ये सब तुम कम देदेव है तापर आम गोटे करेन्ट अफेयर क्लास करदे माराथन टाइप तापर देखा अच्छा तो सी तुमको फ्रीडम स्ट्रगल कौच कि एजाए आम देखी टोटाल कि तुम एनसेंट टू नहीं कि मॉडर्न जाए है ता भर आम मेडिवाल आसला आम देखते कि तुम जो सोमवंशी राजा थे जी कि तुम लास्ट थे तुम मेडिवाल इंडिया रे तापर आस्ते आस्ते आम मॉडर्न को आसिले मॉडर्न आम बहुत प्रकार पर्सनालीटीज को आम जानिले रोल कौन जानिले आज आम देखा कि जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता जो फ्रीडम स्ट्रगल आम इंडिया रे स्टार्ट होता से फ्रीडम स्ट्रगल आम ओडिशा रे भी तार रिफ्लेक्टेंस आसीथिला तो सी कौन कि जो 1900 देख आमर फास्ट टाइम जिनस हूँ कि इंडिया जिनस रिविजन करदे कारण से वाइज ये सब जिनसर रिफ्लेक्टेंस आसो है धर जब 1900 मसीह आम स्टार्ट करवा आम जानले कि जब आम सर्ट टर्म रिविजन करवापर आमर 1905 तुम जानते बंगाल डिविजन होगा ये तुम जो लॉर्ड करिजन थे देन तुम स्वदेशी मुवमेंट 1907 स्टार्ट होगा तापर तो से सब लीडरलेस होगा से स्क्विच होगा तापर 1909 तुम मल्ले मिंटो रिफॉर्म आसला तापर तुम 1914 पाखापाखि तुम कहीपर तुम वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होगा देन तुम पूर्व किंग आसते तुम 1911 दिल्ली दरबार आयोजित होता देन तुम आसते आमर 1916 लखनऊ पैक्ट आम आसते जोटि मर्जर होता ये आमर 1906 तुम कौन होता सूरज स्प्लिट होता ये तुम 1916 कौन है ना लखनऊ पैक्ट आसीगला तापर तुम ये 1900 माने ये तुम टे जस्ट पूर्व तुम 1915 कहीपर महात्मा गांधी आसीगले जहाँ तुम स्वदेशी दिवस रूप में पालन कर जनवरी 9 देन तुम 1917-18 से जो खेड़ा स्ट्राइक तुम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से सब सत्याग्रह सब होगा तापर तुम 1919 मसीहा जो टाइम आसिले आम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते कौन तुम जो रोल एक्ट आसला बस तुम जो खिलाफत मूवमेंट होता तुम जी थे टर्कीर हेड खिलाफ जो खलीफा कहला जो वर्ल्ड वार 1 सैला जो टर्की को खंड विखंडित करदे से टाइम खलीफा पोस्ट को जो टाइम माने बैन करदे से टाइम इंडिया भी तार किसी रिफ्लेक्टेंस देखाई तुम खिलाफत मूवमेंट ना जान मोहम्मद अली सौगत अली को तुम जान से महात्मा गांधी तुम नॉन कॉपरेशन को खिलाफ सहित मिसिकी इंडिया वाइड स्टार्ट करदे तार भी किसी रिफ्लेक्टेंस तुम ओडिशा को आसो आम तक भी देखा देन तुम आस्ते आस्ते जाऊ जाऊ आम देखा कि तुम जो टाइम गांधीजी आरेस्ट होगले चोरी चोरी हत्याकांड पर जो टाइम बंद होगा गांधीजी तुम आरेस्ट होगले तुम गोटे आसते कौन स्वराज पार्टी आसला जी आस्ते आस्ते तुम सीआर दास जो टाइम 1923 जो टाइम डेथ कले तुम सीतारंजन दास तापर आस्ते आस्ते से जिनस स्क्विज होगा से कौन थे गोटे प्रो चेंजर थे माने आउ जड़े माने थे कि अर्थोडक्स टाइप जो मैंने जहाँ भी गांधी को सपोर्ट करुले तो ये प्रो चेंजर मन को तुम स्वराज पार्टी बोली कहूल देन आस्ते आस्ते 1930 आड़ को आसिले 1930 देखिले कि तुम फास्ट टाइम स्वराज ना निगला जनवरी 26 से जो तुम एजाए डेट को तुम कन्स्टिट्यूशन डे पालन कर जो टाइम तुम कन्स्टिट्यूशन 1950 रेडी होता अच्छा देन तुम आम आसीगले 1900 जदि कहीपर तुम 31-32 आड़ को तुम होगा कौन गांधी यूनियन पैक्ट होगा देन तुम गोल टेबल बैठक होगा जहाँ तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तुम 1 2 3 राउंड माने 3टा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा ये बी आर आंबेडकर तुम 3टा को अटेंड कर महात्मा गांधी ओनली सेकेंडा करते ओके तापर देन आस्ते आस्ते जो टाइम माने से टाइम कौन डिप्रेस क्लास जो कहते कि सेपरेट इलेक्टोरेट देदेवे बोली से जो गांधी तुम आमरण अनशन करते आस्ते 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 जाऊ जाऊ तुम वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होगा 1939 बेलू अगस्ट पर आसीगला 1940 बेलू से तुम डोमिनियन स्टाटस जो जिन बोली गांधी डाक स्टार्ट करदे कौन क्विट इंडिया मुवमेंट तापर से तुम किसी लोक प्लान आसला जमी तुम श्री राजगोपालाचारी प्लान तापर तुम 1945 तापर तुम कौन से जो जो सब आसला सब कौन से जो कौन सब माने कमिशन सब जो आसला सब जो है तुम होगा कि कैबिनेट मिशन होगा तुम ओके तुम कैबिनेट मिशन होगले कि तुम आस्ते 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 जो टाइम एमती इंडिपेंडेंस एक्ट पास होगा ये टाइम भितर सब जिन आम देखीदे
इंडिया रे तो सही से रिफ्लेक्ट सब आम ओडिशा को आम देखा फ्रॉम एथिक टू एथिक period Odisha was the freedom struggle against the British rule. This freedom struggle was started from the beginning of the Swaraj movement of the Odisha. Okay. तापर ओडिशा कौन कला ना मार्च द पाथ फ्रीडम स्ट्रगल विथ द रेस्ट ऑफ द इंडिया फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस ए सब जिन कला देन द बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो टाइम एंड होता है आम जो एज टाइम लाइन ए देखिले ओडिशा कौन चलता ना उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास एमर्ज फ्रॉम ए रिमार्केबल रोल ओके प्रोमिनेटिंग द कांग्रेस मूवमेंट इन द ओडिशा तो कांग्रेस मूवमेंट को जे ओडिशा रे जो देखुले से हूँ उत्कल पंडित गोपबंधु दास ए जनरेशन ऑफ द यंग पैट्रियोट लाइक द हरिकृष्ण महताब गोपबंधु चौधरी नवकृष्ण चौधरी भागीरथी महापात्र जगबंधु सिंह मुकुंदर प्रसाद दास नित्यानंद कानूनगो जदुमणि मंगराज निरंजन पटनायक दिवाकर पटनायक चंद्रशेखर बेहरा नंदकिशोर दास राजकिशन बोस एंड अदर आर टू सपोर्ट द नेशनल मूवमेंट तापर प्री इंडिपेंडेंस जो जो टाइम द प्री इंडिपेंडेंस इन द ओडिशा वाज रिमार्क्ड बाय नंबर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स लाइक द स्वदेशी मूवमेंट जोटा कि तुम 1905 स्टार्ट होता है 1907 स्क्विच होगा से स्वदेशी मूवमेंट रे 1905 हार्ड एसेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन द एजुकेटेड ओडिशा पीपल्स तो प्रोटेस्ट कौन होता तुम कटक पुरी बालेश्वर संबलपुर आउ कि प्लेस तुम मूवमेंट स्टार्ट होता आ मीटिंग तुम एक कटक रे म्युनिसिपल हॉल रे तुम सब मीटिंग फिटिंग सब हुए प्रेसिडेंटशिप एटी किए नहीं ना तुम ये डे अगस्ट 20 बाबू जानकीनाथ बोस तो जानकीनाथ बोस तुम 1905 ओडिशा रु कांग्रेस अधिवेशन बा जो मीटिंग होता 1905 जो तुम स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता ओडिशा से सब जिन ये होता तुम ये सब सेंटर थिला आट द कटक जानकीनाथ बोस विश्वनाथ कर एंड दी धीरेन्द्र नाथ चौधरी द नेम इज द जानकीनाथ बोस विश्वनाथ कर एंड दी धीरेन्द्र नाथ चौधरी JBD ओके बीजेडी तुम कौन ना कटक रे दैट इज द जानकीनाथ बोस विश्वनाथ कर एंड दी धीरेन्द्र नाथ ओके तापर स्प्रेड दी मेसेज ऑफ द स्वदेशी द उत्कल दीपिका मेंशन दैट बीइंग द इंस्पायर्ड बाय द स्वदेशी ideas the weaver and the Sambalpur Manpur Sukinda Vasudeva तुमर स्टार्टेड द मैन्युफैक्चरिंग फाइन द हैंडलूम टेक्सटाइल तो तुम कहीपर तुम ये सब एरिया संबलपुर मानपुर सुकिंदा वासुदेवपुर ये सब एरिया तुम हैंडलूम टेक्सटाइल स्टार्ट होगा मेन एंड वुमेन रिच क्लासेस बिगिन टू वेयर बरहमपुर पत्रा ओके एंड दी मनी बांधा साड़ी ऑन द फेस्टिवल्स एंड दी ओकेजन एबे भी ये सब जिन को आमर गवर्नमेंट प्रमोट कराऊँच बिकज ये सब आम ओडिशार हाथ तैयारी जिनस माने जानी थे सब जिन भुवनेश्वर सब हो अच्छा तापर अगस्ट 12 1900 माने 9 गोपबंधु दास एस्टाब्लिश एन आइडियल स्कूल ऑफ अच्छा ऑफ एजुकेशन सोसाइटी नोन एज दी सत्यवादी बन विद्यालय आट दी साखी गोपाल पुरी तो पुरीर साखी गोपाल ठारे से गोटे सत्यवादी बन विद्यालय स्कूल खोलते गोपबंधु दास and established the Satyawadi school was the landmark in the evolution of the national consciousness in the Odisha. It was the school where the children from the all caste and class studied, lived and dined together. Okay, तो सब जिन बुझी पार्थ तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड दी ओडिशा भितर कौन संपर्क थिला जो टाइम 1919 देखिले कि आमर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सहित खिलाफत मूवमेंट को गांधी सेपटे इंडिया रे लॉन्च करदेले एपटे ओडिशा रे जिनस को चलथिला ना इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट the many young of the Odisha left the school, colleges. Some eminent lawyers gave their legal profession. Men like the Gopabandhu Chaudhary, Lingaraja Misra, and Surendranath Das, Muhammad Hanif resigned from the government jobs, and Pandit Nilakanta Das gave up for teaching assignment in the prestigious Calcutta University to serve in the national schools. Okay. तापर 1903 रे the Utkala यूनियन कॉन्फ्रेंस वाज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जगबंधु सिंह तो जगबंधु सिंह प्रेसिडेंसी रे 1903 रे तुम उत्कल कॉन्फ्रेंस होता एंड इन 1905 उत्कल सम्मिलनी वाज द फॉर्म तो उत्कल सम्मिलनी तुम जो फॉर्म होता पचर जगबंधु सिंह प्रेसिडेंटशिप 1903 उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस सहित जड़ित अच्छा मार्च 21 तुम महात्मा गांधी तुम आसगल कौटी ओडिशा को एंड अपील्ड टू द पीपल ऑफ द ओडिशा टू जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो ये डेटा को मन रखि मार्च 1921 तुम महात्मा गांधी ओडिशा को आसते ओडिशा पीपल कहवा कि तुम भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रे जॉइन कर न्यूज़ पेपर लाइक द समाज स्टार्टेड इन
उन्नीस जो समाज तुम एजाए भी घरे देखुच एंड दि उत्कल सेवक प्लेड एन इम्पोर्टाट रोल इन द मूवमेंट ओके तो समाज उत्कल सेवक ये गोटे भल प्रोमिनेंट रोल प्ले करते एंड स्टूडेंट ओडिशा एस्टाब्लीश दि स्वराज सेवक सिंह एट दि कटक फॉर द वर्किंग आउट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द नॉन प्रोफेशन मूवमेंट ओके 1922 दि peasants revolt in the जमींदारी ऑफ द कनिका अकट which was closely associated with the non-cooperation movement अच्छा तापर तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तुम कौन होता है ओडिशा केम फॉरवर्ड फॉर ए vigorous struggle with the coming of the civil disobedience movement all over the coastal area of the ओडिशा कौन पे ना तुम सल्ट लॉ ब्रेक प्रिपेयर द सल्ट ऑन देयर ओन ओके तो समस्त सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ ओडिशा सहित कौन तुम संपर्क से सब जिन विषय लिखाई एट इन दि इंचुड़ी इन दि बालेश्वर जो इंचुड़ी एरिया अच्छी से तुम सत्याग्रह किए लीड करते तुम सुरेंद्र नाथ दास से कौन करते ना गोटे ग्रेट इम्पैक्ट था सहित रमादेवी मालती चौधरी आचार्य हरिहर दास गोपबंधु चौधरी अटल बिहारी आचार्य गोविंद मिश्रा राजकुमार दास डॉट द नाथ कमिंग मेनी ऑफ द लीडिंग स्पिरिट फ्रॉम द जो कौन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ओके तो तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी फास्ट तुम बालेश्वर जो इंचुड़ी एरिया होता मेन किए थे ना लीडर सुरेंद्रनाथ दास अंडर में सब जिन होता एप्रिल 6 1930 तुम जो गोपबंधु चौधरी थे आचार्य हरिहर दास एंड 21 सत्याग्रहीज बिगान देयर फुट मार्च फ्रॉम दि स्वराज आश्रम ऑफ कटक टुवर्ड्स इंचुड़ी इन दि बालेश्वर तो तुम स्वराज आश्रम जोटा कि तुम कटक रे थिला कटक रु बालेश्वर इंचुड़ी जाए से स्टार्ट करते कौन पदयात्रा केबे 6 एप्रिल 1930 12 एप्रिल 1930 द सत्याग्रही रिच एट द इंचुड़ी तो 6 रु 12 जाए पहुँच गए जब तुम से दांडी मार्च होता एंड डिस्पाइट द ऑपरेशन बाय द पुलिस द सत्याग्रहीज मैन्युफैक्चर एंड कंट्रीब्यूटेड द सॉल्ट इट इंचुड़ी ऑन द एतिक ओके तो सिस्टम चल रहा है एमती तापर तुम एप्रिल 20 रमादेवी एंड मालती देवी ए नंबर ऑफ द वुमेन्स टेक पार्ट इन द सत्याग्रह एट द इंचुड़ी द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैरिड ऑन द फ्रॉम द बॉयकॉट द फॉरेन क्लॉथ द एक्सरसाइज ऑफ एंड द मैंने स्प्रेड ऑफ द खादीज जोटा कि तुम चलता तुम इंडिया रे तापर 1931 तुम ओडिशा स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज एट कटक तो कौन है ना तुम ओडिशा स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस तुम ऑर्गेनाइज होगा अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ भूबंधन दास दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेड टू इंक्वायरी इनटू द पीपल्स ग्रीवेंसेस इन द स्टेट ओके तापर तुम इंडिविजुअल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन चलता तुम इंडिया रे जमती कि तुम मार्च 1930 रे रामगढ़ सेक्शन ने ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन व्हिच डिसीजन टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज टेकन तापर ए जो ऑन द 27 सेप्टेम्बर 1940 द उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी अपॉइंटेड HK महताब किए तुम हरेकृष्ण महताब आज द जनरल डायरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन ओडिशा तो ओडिशार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर तुम हेड थे किए जनरल डायरेक्टर थे किए तुम हरेकृष्ण महताब ओके देन हरेकृष्ण महताब arrested after delivering an anti-war speech at the Remuna on the same day तो से टाइम नहीं तुम जो अरेस्ट हो जाते कंपनी से गोटे तुम आंटी वार स्पीच दे देते मार्च 1941 द इंडियन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तुम एंड होगा द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस तुम एंड होगा ओके तो ये मन रखा जिन तुम इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तुम स्टार्ट होता रामगढ़ सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रु तार जनरल से अपॉइंट कर देते हरकृष्ण महताब को तापर से फास्ट डे तुम अरेस्ट हो गले से कारण रेमुना गोटे सेमती स्पीच दे देते आस्ते आस्ते से सब जिन एंड होगा तापर गांधी जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते तुम ओडिशा तार कौन इफेक्ट आसाला ना अगस्ट 1942 ओडिशा प्लेड इट्स फुल पार्ट इन द रिवोल्यूशन विथ वाइड स्प्रेड पॉपुलर राइजिंग इन द रिमोट एंड द रूरल एरियाज ओके लक्ष्मण नायक बिकेम ए मात्री इन द ओडिशा ड्यूरिंग इन दिस मूवमेंट ओके लक्ष्मण नायक बिकेम ए मात्री इन ओडिशा ड्यूरिंग दिस मूवमेंट लक्ष्मण नायक ये मैंने छाड़ ओके लक्ष्मण नायक तुम सब चिन्ह तो तंकर से गोटे मेन भूमिका थिला तुम क्विट इंडिया मूवमेंट रे तो आमर मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर वाज
arrested, but the youth continued the movement. In some part, the Odisha, especially in the Koraput, the Congress, the movement turned the violent. ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ରହିଲେନି କାରଣ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଭାଉଲେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା, ପିପୁଲ୍ ଟର୍ନ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଂ ଫାୟାର ଟୁ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସେସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍. ଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ୱାଜ arrested and executed on ଏତିକି day, March 29, 1943, on the basis of the false charges of the killing forest guard Ramaya. Okay, in the Cuttack district, after the arrest of the prominent freedom leaders, the student of the Revensa College and other educational institutions carried on the movement. About 200 students from the Revensa College marched to the office building on 15 August 1942. ତାପରେ Odisha and the historic fame of the massacre of the Yom in the district of Baleshwar, ଯାହା ବିଷୟରେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ. In this massacre, the large number of people died in a single police station. The incident similar to the Jallianwala Bagh Hatyaकांड, and on the 28 September of 1942, the people of the Yeram village, Vasudeva district, gathered at an open place that is called the Melana Padia, and deserved not to pay tax. They are also attacked the police, due to which of the chief police ordered to open fire this village of the Yam, also known as the Rakta Tirtha Yam. Okay, ଜାଣିବ ଟିକେ ତାପରେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଚାଲିଲା ନା ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳ movement. During the British rule, the prince of the native state of the Odisha enjoyed the full support of the Britishers, and the prince of these states are committed cruel atrocities on their subjects. କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ତୁମର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ, ବଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ. ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କମିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ କ୍ରୁଏଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ. These people were exploited through several taxes like the rasad, magan, bethi, begari. When this type of exploitation become unbearable, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ରସଦ, ମଗାନ, ବେଠି, ବେଗାରି, ଏସବୁ କାହାର ନା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ. ରସଦ, ମଗାନ, ବେଠି ଆଉ ବେଗାରି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ. Became the unbearable. People revolt against the ruling princess and organized the Prajamandala movement. Under the leadership of the Harakrishna Mahatab and the Sarangadhar Das, Prajamandal was formed at the Gariyamal in 1938. On 31 July 1938, on the day of the Rath Yatra, they addressed a huge gathering and made the pointed reference to misrule of the king. This movement take a serious turn in Dhenkanal, and Sri Vishnu Charan Patnaik played an important role in Dhenkanal. The Harakrishna Mahatab and Sarangadhar Das in Prajamandala was formed at the गरियामाल इन 1938. तो 1938 तुम प्रजामंडल फॉर्म होता आग लीडरशिप एच के महताब आ तुम सारंगाधर तुम ऑन द डे ऑफ द रथ यात्रा दे एड्रेस ए ह्यूज गैदरिंग. जिन तुम जान तो एठी किए तुम ढेंकानाल लीड करते श्री विष्णु चरण पट्टनायक. द ब्रिटिश गवर्नमेंट विड्रो ऑल पावर ऑफ द ढेंकानाल किंग एंड इज बेठी वाज रिवोक्ड. द लॉन्ड टैक्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 आना टू द 2 आना and all arrested leaders and the released. The movement spread to the Talcher, Gangapur, Ranpur, Nayagar, Bonai, Sonpur and the Moyurbhanj. Talcher, Gangapur, Ranpur, ଏସବୁ ସୋନପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବୁ ଏରିଆକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା. କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ତମର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦ କିଙ୍ଗ ବିକେମ୍ସ ଟଲରେଣ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ପିପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପଲ୍ ରିଏଲାଇଜିଂ ଦି ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ୱାଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ମିନ୍ସ. ଦ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ accelerated the process of the merger of the native princely state into the Odisha. The Prajamandala movement helped in the ending of the monarchy in Odisha. Okay, so that is the main landmark point. The ending of the monarchy of the India is from the Prajamandala movement. The final phase of the freedom struggle कहाँ लाना on the April 1936 April 1 जोड़े कि तमें हमारा ओडिशा रा नववर्ष. The Odisha was granted the status of the separate provinces, that is the Odia. Day is celebrated on the 1st April every year. The general election was held in the British Indian provinces in 1937 and in the Odisha. The Congress owned 36 seats out of the 60. Thus, it made a way for the first Congress ministry under the leadership of the Vishwanath Das, with 2 other ministers, Nityananda Kanungo and the Bodram Dubey. After the resignation of the Congress ministry, a coalition ministry was formed in November and 1941 with the Maharaja Parala Tremundi as the premier and Pandit Godavari Misra. तो
Maharaja Paralakhemmundi as the premier and Pandit Godavari Mishra and the Maulvi Abdus Soban Khan as ministers. This ministry functioned for a little over 2.5 years. The most of the noteworthy achievements was the establishment of the University of in the ओडिशा एंड द फेमस उत्कल यूनिवर्सिटी इन दिस ईयर तो यही ईयर तुम जो फेमस उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर अच्छे ईयर फर्म होता तो तुम ये तुम आफ्टर दि रेजिग्नेशन अफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री गोटे कोलिजन मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री होता है तुम नवेम्बर एतिक महाराजा पारालाखेमुंडी तुम पंडित गोदावरी मिश्रा मौलवा अब्दुल सबाज खान आज मिनिस्टर ओके तो सही वर्ष तुम उत्कल यूनिवर्सिटी भी फर्म होगा तो द रोल ऑफ द ओडिशान वोमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल अच्छा फ्रीडम स्ट्रगल में ओडिशा वोमेन्स मानकर कौन रोल था दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन माने तुम बहुत इंपोर्टाट यही पारे वोमेन इन दि ओडिशा लाइक दि काउंटर पार्ट इन दि रेस्ट ऑफ द काउंटर मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दि फ्रीडम स्ट्रगल तो रोल सब कौन करता 23 माने 3 मार्च 1921 महात्मा गांधी तुम कटक आसते तो 3 मार्च 1921 महात्मा गांधी कटक आसते आड्रेस ए मीटिंग एट कटक टाउन ये वोमेन्स माने लाइक रमा देवी सारला देवी सरोजिनी देवी मालती देवी एंड मेनी अदर्स अटेंड द मीटिंग एंड द गांधीयन थॉट has the appealed the women so much as they contributed their ornaments to the Tilak Swaraj fund बुझलो Gandhian thoughts has appealed to the women so much that they contributed their ornaments to the Tilak Swaraj fund. Surprisingly, the contribution of the women to the Tilak Swaraj fund was highest. And during the civil disobedience movement, the women played a vital role in the preparation of the salt of the inchudi of the Baleshwar district, like Rama Devi, Malati Devi, जब हमें देखिले, तमर कृष्णबाला सेन, and sorry, at Ichudi is Glavances, the salt satyagraha, a salt committee was formed in Sambalpur committee. Ramadevi established the ashram at Bori. Bori re Ramadevi gote ashram kartile. Gandhiji named the Sevaghar, and the Rana Devi was also represented the Odisha women in the Kasturba National Memorial Trust. The women also handed the British suppression during the Kaipada firing. The Sarala Devi wrote the poem with a view of the create political, social and the national awareness among the people of the Odisha. Sita Devi Kadanga wrote a play named Mandira Pravesa which was based on the Hajin movement of the Gandhiji. Okay. Post independence era with Indian getting independence after August 1947, the issue of merger of the state was taken up immediately. The leader of the Odisha and the India not allowed the princely chiefs to continue their rules, but Harakrishna Mehta took the initiative for the merger of the state without any further delay. The unrest in the exchange of the Nilgiri forced Harakrishna Mehta for the invention and the ex-state was merged with the ओडिशा इन नवेम्बर 1947 तो नवेम्बर ओडिशा 47 रे ये तमर एक्स स्टेट द अनरेस्ट इन द एक्स स्टेट ऑफ नीलगिरी फोर्स्ड हरिकृष्ण मस्टा फॉर इंटरवेंशन एंड एक्स स्टेट वाज मर्ज विथ द ओडिशा এই নভেম্বর 1947 রে द डेवलपिंग क्राइसिस मेड द सेंट्रल इंटरवेंशन इम्पेरेटिव एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल केम टू द ओडिशा इन डिसेम्बर 1947 तो सही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जे कि तुम प्राय 563 रु 560टा तुम प्रिंसली स्टेट को आम ओडिशा सहित मिसई देते आ 3टा राजी ना तुम जम्मू काश्मीर जूनागढ़ इलाहाबाद से तुम पर राजी होगा तुम 2019 तुम उठीगला जम्मू काश्मीर भी and all the princely state except the Mayurbhanj signed the agreement leading over their administration and merged with the Odisha with effect from the 1st January 1948. The Mayurbhanj was also merged with the Odisha a year later, but under some the extraordinary circumstances, the political miscalculation, the two Odia-speaking states like the Seraikela and the Kharswana was merged with the Bihar. Okay. तापर सब प्रिंसली स्टेट मयूरभंज छड़ा साइन सब आग्रीमेंट को साइन करदे जोटा कि तुम माने सब मिसबे बोली एंड तापर 1 जनवरी 1948 रे मयूरभंज भी मिसीगला एंड ओडिशा एलियर एटा बट अंडर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस तुम टू ओडिया स्पीकिंग स्टेट लाइक दिस तो ये दुटा नाम मन रखिबो दैट इज द सेराइकेला एंड दी
ଖରସାୱାନା ସେରାଇକେଳା ଆଣ୍ଡ ଦି ଖରସାୱାନ। ତ ଏସବୁ ଦୁଇଟା ବିହାରରେ ମର୍ଜ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର୍ସ ସବୁ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତମର ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଏ ତମର କଟକ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ 28ରେ। ହି ୱାଜ୍ କମନଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦି ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ହି ୱାଜ୍ ଫାଇଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ହି ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କିଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ହି ୱାଜ୍ ଏ ଲିଡର ରିଫର୍ମର ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଦି ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍। He was a major link in bringing the liberal ideas of the Congress in Odisha. He formed Utkala Union Conference, which played a vital role in amalgamation of Odia-speaking areas. In 1902, as a member of the Bengal Legislative Council, he put pressure on the government to provide more grant of the improvement. The Revensa College, okay, ମାନେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 1902ରେ ଇଜ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ତୁମର ବେଙ୍ଗଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ହି ପୁଟ୍ ପ୍ରେସର ଅନ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ତୁମେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଅ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ହି ୱାଜ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟେନାନ୍ସି ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଟେନାନ୍ସି ବିଲ୍କୁ ଇଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ତୁମର ଫେବୃଆରୀ 4 1939ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମର ବର୍ନ ହେଇଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ 1877 ପୁରୀ। ସେ 48 ଇଏ 77। ହି ୱାଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବା ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ ଯେଉଁ ଗୀତରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆକ୍ସିଲେରେଟେଡ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଟ୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାକୁ ସେ ଆକ୍ସିଲେରେଟ୍ କରିଥିଲେ ବା ପୁଷଅପ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସମାଜ। ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦି ଜର୍ନାଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଫର୍ ଲିଡ଼ିଂ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଅଫ୍ କମିଟି ୱାଜ୍ ଫର୍ମ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ହି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ ଇନ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଲାଇକ୍ ଦି ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କଟକରେ, ଅଲକ ଆଶ୍ରମ ଆଟ୍ ଦି ଜାରଗାତିସପୁର ଆଣ୍ଡ ଦି ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଟ୍ ଦି କଟକ। ତୁମର କେତେଟା ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଇଏ, ଯେମିତି ତୁମର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କଟକରେ, ଆଲକ ଆଶ୍ରମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ, ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଟ୍ ଦି କଟକ। ହି ଅଥର୍ଡ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ବୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଦି ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଧର୍ମପଦ, ଗୋ ମହାତ୍ମ, ଅବକାଶ, ଚିନ୍ତା, ଏସବୁ ବୁକ୍ ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ତୁମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ଆଶ୍ରମ କ'ଣ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ, ନଲକ ଆଶ୍ରମ, ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ୱିଥ୍ ଏନରିଚ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଲିଟରେଚର ହି ରିମେନ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ 1917ରୁ 20। ତ 1928ରେ ଇଏ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ କେସି, ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1892ରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ହେଇଥିଲେ କେଉଁଠି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ। ହି ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାର୍କର ଅଫ୍ ଦି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା। ହି ବିକମ୍ ଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ୱାଇସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦୁଇଥର ହେଇଥିଲେ। ବାଇ ଦି ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଦି ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଦି ଟ୍ୱାଇସ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହି କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ ଦି ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍। ହି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଦ 10th ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ଆଟ୍ ଦି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଇନ୍ 1914, which was a grand success. The Atli sub-commission was created by him to determine the boundary of new Odisha provinces. He went to London for the first round table conference. He died on 25 May 1974। ओके, तो 1992 ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଲେ କି ସେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ को भी ମିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତୁମର ଦୁଇଥର ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ କି ତୁମର ଗଜପତି। ଦେନ୍ ଉତ୍କଳ କନଫରେନ୍ସ ଦ 10th ସେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଟ୍ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଇନ୍ 1914, ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଛାଡ଼, ତାପରେ ରମାଦେବୀ। ହି ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ 3rd December 1899। ସି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ ଭେରି ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏନକରେଜେସ୍ ହର୍ ଟୁ participate in the freedom struggle. She was a granddaughter of the Madhusudan Das and she worked in Alak Ashram and cooked tiffin meals for inmate of ashram. She went to Bari ashram and devoted herself in khadi work, uplift her Harijan and spread of Hindu and uplift the women. And she actively participated in Quit India movement and she was
arrested with Gopabandhu Das and the Malati Devi. During her day of the political activism, she led multiple organizations like All India Chakra Association and All India Women Association, All India Kasturba Gandhi Memorial Trust. ତ ସେଇ ସବୁ ଡେରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସିଜ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚକ୍ର ଆସୋସିଏସନ୍, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓମେନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ. And she formed as an association at the Tumpuriguda of Koraput, named the Navajivan Mandal in 1946 to serve the forest people. She died on 22 July 1985. ତାପରେ ଶାରଳା ଦେବୀ ତୁମର 1904 ମସିହାରେ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ. ଆଣ୍ଡ ସି ବ୍ରଟ୍ ଦ ମେସାଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦି ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା. ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଡି ଥିଲେ ଯିଏକି ତୁମ ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ତୁମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୁମର ଇଏ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ. ଓକେ, ତାପରେ ଶାରଳା ଦେବୀ ଅବଜର୍ଭ ଦି ଫାଷ୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ 6 ଏପ୍ରିଲ ଟୁ 13 ଏପ୍ରିଲ 1921. ସି କଲେକ୍ଟେଡ୍ ମନି ଫର୍ ଦି ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ. ଓକେ, ସି also participated in the civil disobedience and joined the salt satyagraha at the Baleshwar. She was the first lady to go to the jail by order of the court. She popularized the Gandhian constructive work like women education, supplement education, like the things. And she translated the books like History of the Indian National Congress of the Patabi Sitaramyan into Odia. Okay, History of the Indian National Congress, जोटाकि तुमर पटाबी सीतारमन करथिला ताकू ये ओडिया ट्रांसलेट करथिले. बाय हर लिटरेचर क्रिएशन सी एनरिच द ओडिया लिटरेचर. सी डेड इन 1986. मालती देवी से 1904 जन्मग्रहण करथिले एंड फ्रीडम स्ट्रगल थिले. से भी से तुमर इंचुडीर सत्याग्रह मालती देवी नाम देखते. And he encouraged the women at the Srijang to participate in the movement. She attended the Karachi session of the Indian National Congress. He enrolled the many women as the member of the Hindustani Sevadal. Malti Devi was selected as one of the Indian Satyagrahis for the individual civil disobedience movement. She was arrested during the Quit Indian movement. She died in 1998. तापर 1903 तुमर फर्मेसन होगला उत्कल यूनियन कन्फरेन्स. 1905 उत्कल यूनियन सम्मिलन होगला. 1909 फर्मेसन ऑफ द सत्यवादी वन विद्यालय एट दी पुरी. 1921 महात्मा गांधी आसते तुमर एटी कोटी इंडिया को माने ओडिशा को. तपर 1922 द पिजेंट रिवोल्ट एट द कनिका. 6 एप्रिल 1930 द फुट मार्च टुवर्ड्स द इंचुडी एट द बालेश्वर. तापरे 14 एप्रिल 1930 द सत्याग्रहीज मैन्युफैक्चर द सॉल्ट एट द इंचुरी. 1931 द फॉर्मेशन ऑफ द ओडिशा स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस. 1 एप्रिल 1936 ओडिशा ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ प्रोविंसेस. 1938 द प्रजामंडल फॉर्म्ड एट द गरिमाल. 1 डिसेंबर 1940 इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च इन द ओडिशा. 1941 नवेम्बर मसरे कोलेजन मिनिस्ट्री आसला. तुम महाराजा फालाक मुंडिया नाम देखिले. 1942 28 तुम होता तुम मास्करे ऑफ यम वासुदेवपुर इन बालेश्वर. 29 मार्च 1943 तुम मंत्री लक्ष्मण नायक एक्जिक्यूटेड इन दी ब्रह्मपुर जेल जो तुम कही तुम फेक केस रे. तापर डिसेम्बर 1947 सरदार पटेल कम टू ओडिशा फॉर द मर्ज. 1 जनवरी 1948 ऑल प्रिंसली स्टेट 19 माने मयूरभंज छड़ा मर्ज हो जाते. 1949 तुम मयूरभंज भी मर्ज हो गला. अच्छा तापर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिदवा जमती कि तुम टिके The people in Odisha held protest meeting at in which of the place during the Swadeshi movement. Okay, the people in Odisha held protest meeting at which of the place during Swadeshi movement, that is in Baleshwar, Sambalpur, Puri, all of the above. The Satyavadi school in Puri during the Swadeshi movement was established by Satyavadi school Puri thare tamara Gopabandhu Das ko द्वारा हेतला. Okay, who founded the Satyavadi school with nationalist
spirit in Odisha जोटाकि तुम OPSC 2017 आसला who founded the Satyavadi school with nationalist spirit in Odisha, that is the Gopabandhu Das. In which year was Utkala Sammilani was formed? It is 1903. Mahatma Gandhi came to Odisha for promoting the non-cooperation movement in the year, that is 1921. Okay, जाके हम देखिथिले. Who lead the salt satyagraha in the Baleshwar? That is Surendranath Das. When did the salt law was broken in Inchudi of the Baleshwar? In 14th April. Where was the Odisha State People Conference organized in 1931? That is in Cuttack. The first Odisha State People Conference was held under the presidency of, that is Bhubananand Das, who was appointed as the General Director of the Individual Civil Disobedience Movement, that is Hare Krishna Mahatab. Who among the following became the martyr in Odisha during the Quit India movement? That is Lakshman Naik. When was the hero of the Odisha Lakshman Naik executed? That is 29 March 1943. Which of the following events in Odisha is similar to the Jallianwala Bagh incidents in Punjab? That is the massacre of Yom, in which uh, where in the Odisha did the largest number of the people dead in massacre? That is in Baleshwar. Yom is famous Rakta Tirtha for massacre at the Melan Padia, who had lead the Prajamandal movement in area of Dhenkanal. That is Vaishnav Chandra Patnaik. Then almost heroic role in Dhenkanal uprising was played by Suri Vaishnav Charan Patnaik. Then Odisha became a separate provinces in year 1936. The first Congress ministry was made under the leadership of Biswanath Das. After the resignation of the Congress ministry, under whom a coalition ministry was formed in November 1941, that is Maharaja Parala Khemundi. After the resignation of the Congress ministry, under whom a coalition ministry was formed, that is Maharaja Parala Khemundi, ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ 1947 ଆସିଥିଲେ. Which of the state was not amalgamated into Odisha? That is Mayurbhanj. Which Odia speaking state was later placed under the Bihar due to the political miscalculation? That is Saraikela. Select the Saraikela and, that is 2-3, Saraikela and Kharaswan. Which of the following activities is not related to the Madhusudan Das? सत्यवादी स्कूल से रिलेशन नहीं. ओडिशा टेनेंसी एक्ट, उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस, बेंगल लेजिस्लेटिव काउंसिल सहित कनेक्टेड. हु एमंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी इन 1921? That is Gopabandhu Das. The Krishna Chandra Gajapati organized the 10th session of Utkal Union Conference in Paralakhemundi. Who among the following was sole delegated from Odisha in the first roundtable conference? That is Krishna Chandra Gajapati. Who established the Sevagar Ashram at Bori? That is Ramadevi. The Navajiban Mandal at the Tambaiguda of Koraput was formed by the Ramadevi in 1946. Who among the Sarala Devi observed fast during 6 April to 13 April for non-cooperation movement? Who among the following freedom fighter was also a prophetic writer?
that is Sarada Devi. Who among the following was selected as important women member for the individual civil disobedience movement? That is Malati Devi. ତାପରେ କିଏ କାହା ସହିତ which one is incorrect? That is Prajamandal, S.K. Mohtab, Satyavadi School Gopabandhu Das, All India Chakra Association, Navjiban Mandal, Vaidi Ramdevi, Om India Chakra Association, Sarada Devi nathile. That is wrong.